करते हैं। एक्सरसाइज 6 में आ गया क्रिएटिंग एनोटेशन। आर्क मैप ओपन करेंगे। आर्क मैप ओपन हो गया हमारे पास। सेट एज डिफॉल्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें, हमारे पास है geodatabase, then click add the water feature dataset and add water literals. प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज, लेयर प्रॉपर्टीज एंड लेबल्स ओपन करेंगे। लेबल फीचर इन दिस लेयर एज क्लासेस डिफरेंटली। नेक्स्ट में हम लोड करवाएंगे लिटरल फाइल, ओपन एंड ओके। Preparation box, label creation box, click verify. Click OK and apply. OK, apply and OK. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डिफाइनिंग द लेबल्स फॉर दिस सर्विस लिटरल्स। क्लिक द क्लास ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द लेयर प्रॉपर्टीज एंड क्लिक सर्विस लिटरल्स। सर्विस लिटरल, क्लिक ओके। क्लिक अप्लाई, ओके। डिफाइनिंग द लेबल्स फॉर अदर लिटरल्स। ये बाकी लेबल्स वगैरह की सेटिंग है। ये हमारे पास है सेटिंग द रेफरेंस स्केल फॉर द लेबल्स। Click the zoom in tool on ArcMap tools toolbar. Click drag and box around the sum of the lid. ये हमारे पास लेबल्स आ गए। वाटर लिटरल्स, type 1000 and scale box and click enter. Click OK. दोबारा हम स्केल रेंज ओपन कर in the scale box and press enter. ओके। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्टिंग द लेबल्स इनटू एनोटेशन।
वाटर लेबल्स कन्वर्ट लेबल्स टू एनोटेशन। हमारे पास एनोटेशन आ गई सेटिंग। Click the annotation feature class column water literature feature layer and rename the annotation class. वाटर लिटरल्स आ गए हमारे पास। Check the box to require symbol to be selected from symbol label. Click OK to annotation feature class for open dialog box. हमारे पास annotations create हो रही हैं and then close our map click. हमारे पास थी 6 एक्सरसाइज। ये देखिए हमारे पास एनोटेशन बन गई है 8।